Okay friends, let me show you something. Once I scroll down and I just turn on my Wi-Fi. Okay, here you will see there will be one Auto Hotspot which is connected to my Samsung S25 and this mobile is connected to my A55. Okay, so how to disable this? This is very annoying, Auto Hotspot. Okay, every time it shows like this. How to disable this? I will show you step by step how to disable this. So in order to stop this, what we will do, we'll just clear everything and उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, we'll go to settings and then here you will see connections option. Okay, we'll just click here once and then mobile hotspot and tethering, we'll click here and mobile hotspot will just click here and here you can see auto hotspot, it's open. We'll just click here and everything is shown here. What we'll do, we'll just disable it, and this way we have disabled the auto hotspot. And now if I just come here, I think this will be gone from here, बट यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि इस मोबाइल का हम लोगों ने बंद नहीं किया. जिस मोबाइल से मैं फ़िलहाल रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस मोबाइल का भी बंद करना है. ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका भी ऑटो हॉटस्पॉट बंद कर दिया. एंड देन वी विल कम हियर एंड एज वी कैन चेक, यहाँ पे फ़िलहाल मुझे किसी भी तरीके का ऑटो हॉटस्पॉट शो नहीं कर रहा है. एंड इन दिस वे फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल पे वाईफाई ऑन करते ही अगर किसी भी तरीके का ऑटो हॉटस्पॉट दिखता है आप उसे बंद कर सकते हैं. उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा. एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद.